Sometimes all you need is a fireplace, and you by yourself by the fireplace, and that's all. Good to reflect, some shisha. Nice. Assalamu alaikum. I'm here after a while. Been off for quite some time because I got injured during my judo session. So yeah, accidents happen. So I've been out for quite some time, maybe 2 months almost. But I'm here as a comeback video, enjoying this bonfire. And शीशा जो कि ख़राब हो गया है. Yeah, flames are still hot. काफ़ी गर्म है. But anyways, so I've been doing well. Or yeah, I was in quite a mess mentally. It was quite frustrating, but they say health is the most important thing. Yes, wealth is also important, but for that you need to have health. Wow, wow, wow. Health और wealth मिला दी मैंने. So I'm just enjoying myself over here. आज बसंत है, लोग kite flying कर रहे हैं and stuff like that. I'm enjoying me, myself and I. And this little bit bonfire. वैसे ठंड तो काफ़ी कम हो गई, but yeah, इस आग का भी मज़ा आ रहा है, जो कि आग कम हो रही है. I think I need more wood. Wood पड़ी हुई तोड़नी पड़ेगी. Got all the things necessary. So yeah, I thought that आज हम ऐसे करते हैं कि हम अपने बारे में बात करते हैं. Very intellectual thing. टूटा इसको इससे नहीं तोड़ते. तो बहरहाल अभी ये खुद ही आग पकड़ी हुई है इसने बहरहाल. तो साथ साथ हमें इसका भी ख्याल रखना होता है, बिकॉज़ ये जो लकड़ी की आग होती है, जो लकड़ी के कोयले होते हैं, वो मुसलसल आपको चेंज करने पड़ते हैं. वैसे मैंने अपने 2 कोयले अंदर फेंके थे, वो किधर गए? ये रहे. आप देख रहे होंगे प्रॉपर स्क्वायर शेप में. यस, ये आ गया भाई यहाँ पे. इट्स गुड. शायद आपको बैकग्राउंड में मुझे लग रहा है नसीबुल लाल के गाने लगाने शुरू कर दिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये बैन थे. आवाज़ आ रही है, अल्लाह बेहतर जानता है. सो या अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरी इंजरी हुई थी और उसमें आई कुडंट मूव बिकॉज प्लास्टर लग गया था, और शायद आप लोगों ने वीडियो भी देखी हो. एंड सो आई थॉट कि क्या करना चाहिए इन दैट टाइम. सो आई डिज़ाइंड अनदर थिंग फ्रॉम, जिस तरह आपको पता है, आई रन अ ब्रांड कॉल्ड arqnoir. तो उसमें यूजली अभी तो बिकॉज इट्स जस्ट अ स्मॉल ब्रांड, इट्स जस्ट अ स्टार्टअप, तो मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन मैंने थोड़ी सी बढ़ाई. तो विंटर्स थे तो मैंने सोचा चलो हुडी इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो दे आर प्रीटी गुड. कोरियन स्टाइल है, जो ओवर साइज होती हैं. तो आई थॉट लेट्स डू दैट. सो आज छोटी सी वीडियो का मकसद ये है कि आई वांट टू टेल यू आई एम बैक. इंशाल्लाह आई एम गेटिंग बेटर बाय द वे. अभी रिहैब भी चल रही है, और इसके साथ साथ ये है कि बस इट्स अ पेशेंस गेम. गॉड फॉरबिड इफ़ एनीथिंग हैपन्स और आप लोगों को लगता है कि यार दिस इज़ द एंड, नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. देयर आर मेनी टाइम्स जब आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज़ द एंड, ख़त्म हो गया फ़लाना टिमकाना, बिकॉज माई करियर इज़ इन फिटनेस एंड आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर मोर देन अ डेकेड. सो मैंने कहा नहीं, लेट्स नॉट गिव अप. And I fought, and I had immense strength, immense support from my family, my better half, and I never stopped praying.
So alhamdulillah, I don't like pray whenever I'm in need, but I always pray, either despite of the fact that I am in need of something or not. You should too, and get your connection strong with Allah, and just believe in yourself, and time will pass. You know, कहावत है ना, this too shall pass. So गुजर गया वक्त, अब सिर्फ ये है कि rehab चल रही है, and then I'm gonna get back into the game and come back stronger. And if you're still watching up till here, then thank you for your support and hang in there. And now I'm gonna inshallah make a lot of content, some fitness related, some with life, and some fun. I've thought a lot during this time, जिसमें मैं videos नहीं बना पा रहा था, I was unrest, और देखें आग बुझ गई, लकड़ चाहिए, चलो थोड़ी बहुत आग है, कोई नहीं, कोई तेरा भला है. इसको वापस अंदर सोटें, साथ साथ मैं अपने शीशे को भी रिन्यू कर रहा हूँ. Damn. ये आ गया भजन, आग बड़ी स्ट्रॉन्ग है. So doing multitasking. Oh हाँ, plus I'm having my drink. It's sparkling water. I don't drink Coke or Pepsi, whatever. इन लोगों ने स्पॉन्सर नहीं किया, but just in case Nestle, if you want to, I'm here. So yeah, things are going pretty good, and I'm getting better to my stronger self. So inshallah, hopefully, I'll see you soon, guys, and make sure to subscribe, like, comment, and share. Let me know what do you guys think, and hopefully I'll see you in the next one. अबे आग कौन जलाएगा अब?